everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to have an overview of topic 5.2. Yes, I just said overview and not a discussion. And before that, I know the lectures are pretty much very much delayed, but sometimes the circumstances are like that you just cannot go against it. But have faith, we are definitely going to complete it. And, anyways, you have the notes at your disposal and you can always send your emails to me. I'm definitely going to answer them. Yeah, now coming to the topic. I just said overview, right? And not the detailed discussion, which means for a topic like 5.2, where you have to study the linguistic and religious minorities and their social, political and economic status. इन टॉपिक्स के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हेन यू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, हम बहुत ही रिसेंट ले लेते हैं 2021 और 2020 की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर रिलीजन माइनॉरिटीज इन इंडिया। अब अगर आपको ये क्वेश्चन टैकल करना हो, यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ पॉलिटी दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग फॉर योर जीएस। एंड हियर आपको जो भी नोट्स आपके पास है बने हुए, उसको अगर आप रिवाइज करके जाते यू कुड हैव आंसर इट वेरी वेल। वहीं 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है दैट यू कुड आंसर इफ़ यू हैव अ गुड नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग मच टाइम in just going through or reading the slides, I have decided like for such topics जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुझे डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, you can take the help of the notes. Of course, I'm not telling कि आप हमारे ही notes से करो, you can have it from anywhere, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वाले notes उठाओ and इस topic को complete करो. And for those of you who wanted to take the notes और जिनके पास already notes बने हुए हैं और मतलब लिए हुए हैं, दे कैन जस्ट गो एंड रेफर ओवर देयर। आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं वो इन नोट्स के कंटेंट से इजीली आंसर किए जा सकते हैं। एंड इवन दो इफ सम ऑफ यू हैव सम डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आप मुझे ईमेल कर सकते हो एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज फॉर इट, सो दैट मेरा भी थोड़ा टाइम बचे एंड आई कैन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द सिलेबस जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है इन अ मच फास्टर वे। आई होप यू अंडरस्टैंड what I'm trying to say, okay? और जिनको भी notes चाहिए, they can check the links in the description. All right. Thank you so much, and I'll come up with the detailed lecture for the next topic.